Hello, lovely people. I'm Radha Tripathi, and I welcome you all to this amazing session of Chhattisgarh Judicial Services Prelims Examinations 2023. तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो चुका है, ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, आंसर्स आप सब जानते ही होंगे। तो इस वाले सेशंस में भी हम आंसर्स तो जानेंगे ही, बट वी विल आल्सो बी नोइंग द सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस अलोंग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, यू विल बी रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स एंड यू विल बी नोइंग द एरियाज फ्रॉम विच द एमसीक्यूज कम। ऑल राइट, एंड आपको ये भी पता चलेगा हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज ऑन देयर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ जज। रीजन बीइंग कि चाहे छत्तीसगढ़ आपका स्टेट हो चाहे ना हो, इररिस्पेक्टिव वेदर यू हैव गिवन योर छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशंस और नॉट, जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो आगे आने वाले हर एग्जाम्स में वो यूजफुल होता है। और इस सेशन में वी विल बी डीलिंग कि हमको कैसे वी विल बी लाइक नोइंग द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, आर्ट ऑफ नोट मेकिंग अलॉन्ग विद दैट जजमेंट राइटिंग थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि हमें यू नेवर नो विच कॉन्सेप्ट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू और जिससे आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ऑल राइट, so on this note, without any further delay, let's get started. So we have set number D, and before proceeding I must tell you the strike rate that we achieved, and it was 96%. strike rate का मतलब है the questions जो हमारे content से आए, तो मतलब 96% of the questions were from our content. All right, and reason behind is the explanation that we provide with our MCQs. All right, so अब आप सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वहाँ का लोकल जीके तो नहीं आता क्वेश्चन में। सो नॉट एवरीथिंग इज लाइक फॉर द एग्जामिनेशंस ओनली। जिस स्टेट में हम एग्जाम देने जा रहे हैं वी मस्ट नो दैट स्टेट, वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट है, वहाँ का क्या ट्राइब्स है एंड एवरीथिंग। रीजन बीइंग कि उस स्टेट से आपका कुछ इंटरेस्ट डेवलप होता है, एंड सेकेंडली इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि आप इस स्टेट में आए हो तो यू मस्ट नो अबाउट दैट स्टेट, राइट। सो these are the types of forests which are there. These are the ranges: Satpura Ranges, Bakhelghan Plateau, Maikal Range, Chota Nagpur Plateau. The state animal is Asian water buffalo, sal tree is the state tree, and hill myna is the state bird. And further we see the festivals which are celebrated here, the sanctuaries and the national park. The highest peak is Gorlata. All right. Now the festivals, the Buster Dashera is here. It is celebrated for the 75 days. It starts around the August and ends in October. इसके अलावा माघी पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी गिवन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, क्रिश्चियन लॉ और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज बी हियर, एंड इट वाज फ्रॉम द सिंप्लीफाइड नोट्स ऑफ द एड्सॉर्ब लॉ प्रीमियम। सेक्शन 2 में देखो आपको क्या प्रोवाइडेड है। दिस टेबल इज गिवन टू यू। एक टेबल फॉर्म में आपको सेक्शन 2 पूरा प्रोवाइडेड है कि व्हाट इज रिपील्ड, व्हाट इज सेव्ड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड। फर्दर दिस पिक्चर इज प्रोवाइडेड टू यू। अब ये पिक्चर देख के आपको पता चल गया कि मोमडन लोग हैं। अब ये पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी ज्यादा देर तक। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी स्टडी हुई थी जिससे ये पता चला कि जो पिक्टोरियल मेमोरी है हमारे ब्रेन की, दैट इज वेरी हाई। ऑल राइट, तो अगर हम बिना पिक्चर्स के और बिना इलस्ट्रेशन से जब पढ़ते हैं तो वी आर जस्ट नॉट फुली यूटिलाइजिंग आवर ब्रेन्स पोटेंशियल। ऑल राइट, now we have question number 2. Under the Transfer of Property Act, what kind of property is transferable? Right to re-entry, public office, pension, any kind of property if not prohibited by law. The correct answer is D here, and it was from the module 2 of the Edzorb law Q bank. तो सेक्शन 6 में ये प्रोवाइडेड है। जनरल रूल है कि सभी प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है, जैसे कि स्पेस सक्सेशनिस्ट, right to re-entry and the easement except to the owner, religious office, serving of inams, maintenance rights, mere right to sue, illegal transfers and public office and stipends. All right, now we have question number 3. A gives rupees 1000 to B on condition that he shall marry A's daughter C. At the date of transfer, C was dead. The transfer is regular, irregular, void, voidable. The correct answer is it is void, and it was from the module 2 of the Edzorb law Q bank. सेक्शन 25 में से ये लिया हुआ है, एंड सेक्शन 25 डील्स विद द कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है कि वो ट्रांसफर विच हैपेंस ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। पर अगर कंडीशन ही इम्पॉसिबल है, जैसे कि सी इज डेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि आप सी से शादी करो तो ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाएगी, और उस तारीख को सी इज डेड, तो अब भूत से शादी तो नहीं करोगे आप, राइट। वो सिर्फ मूवीज में ही होता है कि भूत से भी शादी हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज प्रोवाइडेड हियर कि for any kind of conditional transfer to be valid, the condition that is imposed should not be prohibited by law, an act that involves fraudulent acts, an act that is impossible, an act that is termed as violative of public policy, should be immoral, any act that incurs any harm to any person of his property.
Okay, now we have next question. The doctrine of lis pendens is based on the necessity of the final adjudication, principle of equity, principle of estoppel, or both A and B. The correct answer is D, both A and B. And it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. तो क्या ऑब्जेक्ट्स हैं सेक्शन 52 के कि स्टेटस को रहना चाहिए कि जब तक प्रॉपर्टी अभी कोर्ट में है, मतलब कोर्ट उससे डील कर रहा है, उसके ऊपर एडजुडिकेट कर रहा है, तब तक स्टेटस को मेंटेन रहे, अभी तक जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलता रहे. ठीक है. And it is based on the principles of equity, good conscience, and justice, equitable and just foundation. All right. Now we have next question. Question number 53A of the Transfer of Property Act deals with the fraudulent transfer, part performance of the contract, specific performance, and doctrine of election. The correct answer is B here. Very simple question and very important one also. And it was from the module 2 of the Edzorb law, Q Bank. अब सेक्शन 53A किससे डील करता है? इट डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. जजमेंट राइटिंग में भी इससे रिलेटेड कुछ आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आ सकता है. एंड थर्डली आपके प्रीलिम्स में तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है. अब ये तो हमको पता है कि नो राइट पासेस अंटिल द सेल इज कंप्लीट. ऑल राइट. बट इफ पर्सन आफ्टर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्स हिज पार्ट और डज एनी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्समेंट और द परफॉर्मेंस इफ द अदर पार्टी बैक्स ऑफ. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे ये देखो यहाँ पर शी इज अदिति, ही इज बाला. इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी. नाउ शी इज सेइंग दैट आई डोंट वांट टू सेल दिस हाउस एनी मोर. बट ये क्या कह रहे हैं? आई एम विलिंग टू पे द अमाउंट अग्रीड अपॉन. तो अब क्योंकि ये बैक ऑफ कर रहे हैं तो या तो इनको इन्होंने जो पैसे दिए हैं वो वापस करने पड़ेंगे या फिर ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट डाल सकते हैं. ठीक है. एंड फर्दर किस तरह का राइट होता है ये? दिस इज ओनली अ डिफेंस राइट. इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल. तो जो ट्रांसफरर इज बार्ड फ्रॉम असर्टिंग हिज टाइटल इन दिस केस. अब ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में और वैसे भी मेंस में आता है. एमसीक्यू के साथ आपने ये पढ़ लिया इसी के साथ, है ना. यहाँ आगे केस लॉ आ गया. ये आपका एक फुल फ्लेश्ड आंसर तैयार हो गया. तो अब आप ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसते हो जहां पर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और अब आप मेंस आने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है ना प्रीलिम्स रिजल्ट और मेंस के बीच में. तो उसी समय अगर आप नोट्स बनाओगे, उसी समय पढ़ना शुरू करोगे, तो कैसे आपका मेंस क्वालिफाई होगा? और मेंस क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर तो आगे कुछ जाने का मतलब ही नहीं है. ठीक है. तो जब आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हो, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हो, प्रीलिम्स कम्स मेंस कम्स इंटरव्यू. क्योंकि देखो क्या है कि आइसोलेशन में कभी भी तैयारी नहीं होती कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हो. ऑफ कोर्स प्रीलिम्स इज द टिकट टू द मेंस. प्रीलिम्स की भी करनी ही पड़ेगी तैयारी, पर मेंस एज द नेम सजेस्ट कि ये मेन एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है और बहुत अच्छे से और शुरू से तैयारी करनी पड़ती है. तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, हमेशा अपने साथ एक बेयर एक्ट रखो, एक कमेंट्री बुक भी रखो और उससे रिलेटेड आप लीडिंग केस लॉ भी देखो. और सिर्फ वही सेक्शन मत देखो जिसका एमसीक्यू आया है, उसके आगे के 2 सेक्शंस देखो और पीछे के भी 2 सेक्शंस देखो. तो इस तरीके से जब आप बार बार रिवाइज करते हो, देखो इससे कुछ मतलब नहीं है कि आपने एक दिन में 1000 क्वेश्चन लगा लिया. अब जब आपने उसका एनालिसिस ही नहीं करा तो उसका क्या मतलब? आप 100 क्वेश्चन लगाओ, विद कॉन्सेप्ट उनको पढ़ो, आपके वो 600 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 100 क्वेश्चन हो जाते हैं. ठीक है. तो आपको हमेशा इसी तरीके से पढ़ना है, एक इंटीग्रेटेड होलसम तैयारी करनी है. ऑल राइट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, व्हेन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल नेसेसरी? मूवेबल प्रॉपर्टी अबव 100, immovable property above 100, immovable property of any value, only A and B. The correct answer is B here. All right. Now this is from the simplified notes of the Edzorb law premium. यहाँ प्रोवाइडेड है सेल हाउ मेड. तो टेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ 100 एंड अपवर्ड्स की कैसे होगी? थ्रू द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, व्हाट is in relation to the mortgage? Without consideration, it is void. It is the transfer of absolute interest in the property. It is equally applicable to Hindus and Muslim and none of the above. The correct answer is B here. Absolute interest नहीं होता है. All right, and this was from the simplified notes of the Edzorb law premium. Section 58 में आपको mortgage provide a very important section for your mains also. इसमें फर्दर टाइप्स ऑफ द मोर्टगेज भी हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी के सब क्लॉसेस में से आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. तो क्या एसेंशियल्स है मोर्टगेज के? फर्स्ट, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड or to be advanced by way of loan existing or the future debt, or the performance of the engagement that gives rise to the pecuniary liability. Okay. अब mortgager कौन होता है? Mortgager is the transferor, mortgage is the transferee, mortgage money is the principal money which is secured. Mortgage deed is the instrument by which the transfer is executed. Now we have question number 8. Under the Transfer of Property Act, the termination of the lease of immovable property shall be in the following manner: oral, written,
sending message or telephonic information, the correct answer is written notice. ठीक है, and it was from the module 2 of the Edzorb Law Q Bank. It is provided under section 111. तो इन तरीकों से हम नोटिस दे सकते हैं. एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू क्विट, ठीक है, फोर फीचर, ब्रीच ऑफ द कंडीशन, रेनाउंसमेंट, बाय द implied surrender, by the express surrender, by the same owner interest of the lesser, and all these. All right. Now this is the case law. Implied surrender में क्या होता है? Through the creation of the new relationship तो implied surrender होगा, और दूसरा relinquishment of the possession. Now we have question number 9. Under the Transfer of Property Act, what is not required in gift? Donor and donee, consideration, movable and immovable property, transfer and acceptance. The correct answer is consideration. Gift में कोई consideration की जरूरत नहीं होती. सी जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हमको बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं. ये चेक करते हैं कि आप कितने अटेंटिव हो व्हाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन. नॉट लिख देते हैं, नॉट ट्रू लिख देते हैं, फॉल्स लिख देते हैं. तो ये जब हम क्वेश्चंस जल्दबाजी के चक्कर में हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, और यही जल्दबाजी हमको बहुत महंगी पड़ जाती है. एक दो नंबर भी अगर हम इसकी वजह से पीछे रह जाएं तो आपको पता है प्रीलिम्स में क्या मारा मारी लगी रहती है कट ऑफ में पहुंचने के लिए. ठीक है, तो हमको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं. आप 2 बार क्वेश्चंस पढ़ो, बट आप सही तरीके से उसका आंसर करो. And this was from the module 2 of the Edzorb Law Q Bank. Section 122 में defined है. क्या होता है? What is gift? It is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily without consideration and accepted by the donee. Now question number 10. Which of the following is not an actionable claim? Right to a provident fund account, promise to pay rupees 500 if the promisee succeeds in LLP, promise to pay 500 if the promisee marries a particular woman, right to claim a benefit of a contract coupled with the liability. The correct answer is A here, and it was from the module 5 of the Edzorb Law Q Bank. ठीक है, सेक्शन 3 में डिफाइंड एक्शनेबल क्लेम, और ये भी आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, तो इसको हमको साथ में ही पढ़ लेना है. फर्दर आपको इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है कि what is included in actionable claims and what is not excluded in actionable claims. ये लिस्ट आप हमेशा प्रिपेयर करके अपने पास रखो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं. जैसे अभी तो हमसे पूछ लिया प्रोविडेंट फंड के बारे में, अगले उसमें हो सकता है पूछ ले कॉपीराइट के बारे में, मीन प्रॉफिट्स के बारे में. तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी स्टेप. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. Under the Court Fees Act, the person appointed to sell the stamp disobeys the rule, or the person not appointed who sells or offers to sell the stamp shall be punished by fine, by imprisonment for a term which may extend to 6 months, imprisonment for a term which may extend to 9 months, A and B both. The correct answer is D here, and it was from the module 4 of the MCQ factory. Now the next question. Read the following statement and answer the correct option. Before passing the order on the request of the plaintiff regarding the exemption from the payment of the court fee under Section 35 of the Court Fees Act, the trial court is not bound to follow the procedure prescribed in Order 33 of the CPC. It is not necessary to issue notice to the collector before considering the petitioner's petition for the exemption from the payment of court. While making an application for exemption from the payment of the court fee, the trial court should be communicated to the collector by the court. So all the options are correct here. Now we have next question. In relation to the Court Fees Act, in the following statements, the false statement is, again the false statement. See, यहाँ पर हमको attention देने की ज़रूरत रहती है. If an application for the review of the judgment is presented on or after the 19th day from the date of the decree, the fee leviable on the plaint or memorandum of appeal shall be payable. Next option is, an application for the review of the judgment if presented before the 30th day from the date of the decree, the appropriate court fee shall be payable at the half of the fee leviable on the plaint or the memorandum of the appeal. The correct answer is both A and B are correct, and it was from the module 6 of the MCQ factory. Now we have next question. Question number 19 of the Court Fees Act is related with the documents exempted from the court fees. Yes, this is the right option, and it was from the module 6 of the MCQ factory, Edzorb Law Premium. Now question number 15. Under the Indian Limitation Act, the period of limitation is not attached in case of suit against the debtor, mortgagee, tenant, trustee. The correct answer is trustee, and it was from the module 3 of the Edzorb Law Q Bank. सब सेक्शन 10 क्या है कि ट्रस्टी और उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट में कोई भी लिमिटेशन का बार नहीं होता. तो आपने अगर कुछ ऐसा धोखाधड़ी करी है तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, आपको बिल्कुल वो दबोच लेंगे, क्योंकि धोखा कानून बर्दाश्त नहीं करता. ठीक है, वो भी ट्रस्टी और रिप्रेजेंटेटिव होते हुए. ऑल राइट, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन.
Under the Indian Limitation Act, before the expiry of the period of limitation, A has acknowledged in writing the amount due as debt from B and has promised to pay. What is the effect of such acknowledgement? No effect on the period of limitation. Fresh period of limitation will start from the date of such acknowledgement. Period of limitation will be extended for 6 months. Period of limitation will not be applicable. The correct answer is B here. And it was from the module 4 of the Edzorb Law Bank. See, section 18 deals with the effect of acknowledgement in writing. Again आपके पास मेंस का क्वेश्चन आ गया, जिसकी तैयारी आपने प्रीलिम्स के एमसीक्यूज के साथ ही कर ली है. ठीक है, अब ये देखो इमेजेस, आपने नोटिस करा कि हमने क्यों इतने सारे इमेजेस यूज करे हुए हैं. मैं आपको बताती हूँ, एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जहां पर देयर वर 2 ग्रुप ऑफ पीपल. एक ग्रुप को टेक्स्ट के थ्रू चीजें समझाई गई और एक ग्रुप को थ्रू इमेजेस के थ्रू चीजें समझाई गई. 3 दिन बाद उनको टेस्ट करा गया कि उनको कितनी चीज % ऑफ द इन्फॉर्मेशन दे हैव रिटेन्ड. तो जिन्होंने सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू रीड किया था या सुना था, सुनने वालों का तो और पुअर था. जिन्होंने सिर्फ रीड किया था उनका सिर्फ रिटेंशन पावर था, दैट वाज जस्ट 20%. और जिन्होंने रीड पिक्चर्स के थ्रू देखा था चीज़ों को और पिक्चर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, उनका जो रिटेंशन था दैट वाज 70 to 80%. अब आप सोचो एग्जाम में आपको क्या याद करना है, क्योंकि इसके पीछे देखो लॉजिक ये है कि जो ब्रेन होता है ना, टेक्स्ट तो नेवर एंडिंग होता है, पर ब्रेन जो है वो एक इमेज 0.013 सेकेंड्स में कैप्चर कर लेता है. जब वो इतनी जल्दी कैप्चर करता है तो वो ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे कर सकता है, ज़्यादा देर तक उसको रिटेन कर सकता है और जल्दी उसको रिकॉल कर सकता है. अल्टीमेटली जो भी जद्दोजहद हम करते हैं, रिविजन की, लिख के पढ़ने की, मेमोराइज करने की, ऐसे आंख बंद करके, वो सब जद्दोजहद किस लिए है? इसलिए ताकि हम रिकॉल कर सकें. तो आप जब अपने नोट्स बनाते हो और जो भी आपके लाइक आंसर राइटिंग की जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में तो आप वो यूज़ कर सकते हो फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, बट जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना, उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बनाओ, बहुत सारे पिक्चर्स बनाओ, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, समझ में आए. रिवीजन के लिए एकदम पिक्चर देखते ही चीज़ याद आ जाए. ठीक है, तो इसीलिए एड्जॉर्ब का जो कंटेंट है, जो इसके सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं और बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू और बहुत ही अट्रैक्टिव मेथड के थ्रू आपको समझाया गया है. अब आपको पता है लॉ की जिंदगी वैसे तो होती ब्लैक एंड व्हाइट ही है. ब्लैक एंड व्हाइट आपका ड्रेस होता है, बेयर आर्ट्स ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर कलर्स लेके आता है एड्जॉर्ब आपके लाइफ में. Okay, now moving on to the next question. During the period of legal disability, the period of limitation shall remain suspended, continue to run, be extended to limited period, or increase. The correct answer is remain suspended, and this was from the module 3 of the Edzorb Law Bank. सेक्शन 6 डील करता है किससे? लीगल डिसेबिलिटी से. लीगल डिसेबिलिटी में 3 ही चीजें आती हैं. अब देखो हमने पिक्चर देखी और हमको याद हो गया, माइनर, इनसेन एंड इडियट. आगे क्या है कि जहां पर 2 डिसेबिलिटीज हैं तो और या फिर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय द अनदर डिसेबिलिटी. तो जब दोनों डिसेबिलिटी सीज होंगी तब लिमिटेशन पीरियड रन करेगा. ओके, now we have question number 18. Under the Indian Limitation Act 1963, in case of continuous breach of contract, what shall be the period of limitation be reckoned as? 3 years, 1 year, 2 year. Fresh period of limitation shall run at every breach of the contract. The correct answer is D here. And this was from the module 4 of the Edzorb Law Bank. ठीक है, section 22 में किससे related है? Continuing breaches and the contracts. Okay. Now we have next question. In which section of the Indian Limitation Act 1963 effect of death before accrual of right to sue is provided? Section 16, 18, 19 or 20? The correct answer is A here, that is section 16. And this was from the module 4 of the Edzorb Law Bank. See, ये सारा एरिया है जहां से आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सेक्शन 13 आपको पढ़ना होगा, 14, 15, 16. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ वो सेक्शन नहीं पढ़ना है जो हमसे पूछा गया है, बल्कि उसके आगे के भी पढ़ने हैं और उसके नीचे के भी पढ़ने हैं. Now we have question number 20. In which section of Indian Limitation Act the time is provided for acquiring the easement by way of prescription? Section 24, 25, 26 and 27. The correct option is section 25. And it is from the module 5 of the Edzorb Law Bank. अब जो section 25 है, ये भी आपका important area है. ये आपको मेंस में पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में. ठीक है, ईसमेंट का जब टॉपिक आएगा तो इसको देख लेते हैं. इन केस ऑफ द एक्सेस एंड द यूज ऑफ लाइट एंड एयर, इन तीनों चीज़ों में एक्सेस, यूज ऑफ लाइट एंड एयर, यहाँ पे ये 2 चीज़ें याद रखनी. पीसेबली एंड ईजमेंट एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन हैज बीन एंजॉयड फॉर 20 ईयर्स. ठीक है, और इन केसेस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द 30 ईयर्स. वेयर एज जब हमारी बात हो रही है कोई वे, वाटर कोर्स और यूज ऑफ एनी वाटर, इन सच केसेस that right, that easement has to be enjoyed with peaceably,
ओपनली, अब यहाँ ऊपर ओपनली नहीं था, यहाँ ओपनली भी है, बाय रीजन ऑफ पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू एज एन ईजमेंट ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 ईयर्स एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉर द 30 ईयर्स। सरकार है भाई, वो उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है ना, उनका राइट ऐसे ही थोड़े मर जाएगा। Now we have question number 21. Through which amendment and which year was section 32 of the Indian Limitation Act 1963 was removed? The correct answer is C here, Repeal and the Amendment Act 1974, and it was from the module 1 of the Edzorb Block Bank. Now moving on to the next question, question number 22. The definition of the easement in section 25 and 26 and in section 2 shall not apply to the matters arising in the territory to which the Indian Easement Act of 1882 extends for the time being related with Limitation Act section 29, Easement Act section 2, none of the above, A and B. The correct answer is A here. And this was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. अब सेक्शन 29 सिंप्लीफाइड नोट्स का क्या मतलब होता है, आपको चीज़ों को सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो सेक्शन 29 को, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट इफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, स्पेशल एंड लोकल स्टैट्यूट्स, एरिया वेयर द इंडियन ईजमेंट एक्ट एक्सटेंड्स। तो हमको पूरा सेक्शन पढ़ना है, ऑलराइट, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 23. अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी postmaster, post office saving bank, or all of the above. The correct answer is C here, post office saving banks. And this was from the simplified notes of the section 3 of the Edzorb Law Premium. All right. Now we have question number 24. Section 10 of the Negotiable Instruments Act is related to inland instruments, foreign instruments, holder in due course, or none of the above. The correct answer is none of the above, because it is related to the पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। एंड दिस इज वाज फ्रॉम द मॉड्यूल 11 ऑफ दैट Edzorb Law Bank. ओके, अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। पेमेंट बाय द अपेरेंट टेनोर, पेमेंट मस्ट बी मेड बाय द ड्रॉई और द एक्सेप्टर। किसको करनी है? पेमेंट टू द पर्सन हु हैज द इंस्ट्रूमेंट, एंड पेमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। All right, now we have question number 25. Under the Negotiable Instruments Act, presumption as to foreign law is related to section 136, 137, 135, or none of the above. The correct option is section 137. And this was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. अब क्या presumption है as to the foreign law? That the law of any foreign country regarding promissory notes, bills of exchange, checks is presumed to be same as that of India, unless and until contrary is proved. इसका मतलब क्या हो गया? This is a rebuttable presumption. आप इसको rebut कर सकते हो। Okay, so now we have question number 26. Instruction of the stop payment issued to the banker could be sufficient to make the accused liable for an offence punishable under Negotiable Instruments Act. Section 138, 139, 136, and 140. The correct answer is section number 138. And it was from the module 12 of the Edzorb Law Question Bank. ठीक है, section 138 क्या है? This is the very most important of the section of the entire Negotiable Instruments Acts. पता ही है कितने केस लॉज भी पेंडिंग है relating to this in our courts. All right, तो ये क्या होता है? क्या इसका cause of action इसका arise होता है? When the check is made for the payment of discharge of any debt or other liability, फिर check has been presented in the proper time like 3 months and it is dishonored. Dishonored के 15 days तक you have to give the notice about the dishonor of check to the drawee. Drawer ने क्या करा? Drawer did not pay even after the receiving the notice. उसके बाद आप इसमें केस फाइल कर सकते हो। All right, this is the case law Nanda versus Nandkishore 2010 of the case. Now question number 27. Chapter 14 of the Negotiable Instrument Act is related to check crossed generally, check crossed specially, crossing of check after the issue, or all of the above. The correct answer is D here, all of the above. This was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. See, अब टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स क्या होते हैं? जनरल क्रॉसिंग होती है, स्पेशल क्रॉसिंग होती है। जनरल क्रॉसिंग में सेक्शन 123 और 126 आ गया, स्पेशल क्रॉसिंग में 124 एंड 127 इज देयर। Now question number 28. Presumption as to negotiable instrument shall be made as to date, order of endorsement, that holder is holder in due course, or all of the above. The correct answer is D, all of the above. ठीक है, and this was from the module 2 of the Edzorb Law Bank.
सेक्शन 18 के प्रिजम्पशंस देखो, ये बहुत ब्यूटीफुली आपको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब टेबल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर देता है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। क्या क्या प्रिजम्पशंस है, अबाउट द कंसिडरेशन, एज टू द डेट, एज टू द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफर, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। Now we have question number 29. The maker, acceptor, endorser respectively of a negotiable instrument is discharged from the liability thereon by cancellation, release. A and B both are correct or none of the above. The correct answer is C here. And it was from the simplified notes of the Edzorb law premium. ठीक है, तो डिस्चार्ज कैसे होता है, सेक्शन 82 में प्रोवाइडेड है, बाय कैंसिलेशन, बाय रिलीज, फर्दर बाय द पेमेंट। Okay. Now we have question number 30. Under the Registration Act, the exemption of certain documents executed by or in favor of the government is related to section 88, 89, 90 or none of the above. The correct answer is section number 90. That is option number C. And it was from the module 4 of the Edzorb Law Bank. ठीक है, section 90 यहाँ provided है और ये आपको सारे जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं, they are provided in this beautiful manner to you. And further, this case law is given to you. And yes, case law मुझे याद आया, the Edzorb law has recently launched their case law notes. उसमें क्या किया हुआ है, एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी केस लॉस है, लैंडमार्क अलॉन्ग विद द रीसेंट इवेंट्स इकट्ठे दिए हुए हैं। जैसे थेफ्ट का एक टॉपिक है, तो उससे जो भी केसेस हैं वो आपको दिए गए हैं। तो द प्रीमियम यूजर्स आर जस्ट सॉर्टेड विद दिस थिंग्स। तो आप भी जब भी नोट्स बनाएं केस लॉस के लिए, तो आप एक सेपरेट बुक लें, उसमें टॉपिक लिखें और उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉस हैं आप उसको लिखो और साथ में रीसेंट केस लॉस उसमें ऐड करते जाओ। तो आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, एंड इवन फॉर योर इंटरव्यू पर्पसेस योर केस लॉज आर डन। ठीक है, ऑलराइट। और आपको उसके फ्री डेमोज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज एड्जॉर्ब लॉ ऑफिशियल, एंड दैट इज द बेस्ट चैनल फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन। वहाँ बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। फ्री मॉक्स का सारा इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू देयर, और मॉक्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। रीजन मीन जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसको ध्यान में रख करके वो मॉक्स बनाए जाते हैं। All right, now we have question number 31. Under the Registration Act, the document other than the wills remaining unclaimed in any registration office for the period exceeding dash years may be destroyed. 10, 5, 3 or none of the above. The correct answer is 3 because the option is 2 years. And it was from the module 4 of the Edzorb Law Bank. 85 में ये provided है कि 2 साल से ज़्यादा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अनक्लेम्ड है ऑफिस में, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बट विल को डिस्ट्रॉय नहीं करते। दिस डज नॉट अप्लाई ऑन द विल्स, विल्स आर नेवर डिस्ट्रॉयड, विल्स इमॉर्टल हैं। Now we have question number 32. Under the Registration Act, the penalty for making the false statements, delivering false copies or translations, false personations and abatement shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years, which may extend to 5 years, which may extend to 3 years or none of the above. The correct option is option number A. And it was from the module 4 of the Edzorb Law Bank. ठीक है, section 82 में ये पूरा आपका punishment का एरिया प्रोवाइडेड है। All right. Now we have next question, question number 33. Under the Registration Act, the state government shall prepare a table of fees payable for the registration of the document, for searching the register. A and B both are correct or none of the above. The correct answer is C here. And it was from the module 2 of the MCQ factory. Now we have question number 34. Under the Registration Act, the time limit to appeal to registrar from the orders of the sub-registrar refusing the registration on the ground other than the denial of execution is 45 days, 60 days, 90 days or 30 days. The correct option is 30 days. And it was from the module 3 of the Edzorb Law Bank. Section 72 is provided to you. सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर से अपील कहाँ होगी, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, ओके। Now we have question number 35. Under the Registration Act, the power to administer oaths and records of the substance of statements are related to section 63, 62, 61 or 64. The correct option is section number 63. And it was from the module 3 of the Edzorb Law Bank. Section 3 किससे related है, power to administer oaths and the records of the substance. ठीक है, okay. Now next question, question number 36. Under the Specific Relief Act 1963, when the court has power to engage explorations under section 14A, when the court considers is necessary, it is expedient, or on application of the party, or all of the above. The correct option is option number A, and it was from the simplified notes of the Edzorb Law Premium. Section 14A ये 2018 अमेंडमेंट से आया था। क्या कहता है ये कि पावर है कोर्ट के पास टू एंगेज देयर एक्सपर्ट्स।
ठीक है, क्यों? क्योंकि टू असिस्ट ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज। वाई? क्योंकि आप जजेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि उनको इंजीनियरिंग का भी पूरा नॉलेज हो, बायोलॉजी का हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड सभी चीज़ें पता हो, टैक्स से रिलेटेड सभी चीज़ें पता हो। तो फॉर दैट पर्पज दे मे एंगेज एनी एक्सपर्ट्स and they can direct him to produce such issue, secure their attendance, providing evidence, including the production of the documents. Further, it may direct any person to require or direct any person to give relevant information to the expert. उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी गुड्स दिखाने हैं, सैंपल्स दिखाने हैं, वो पार्टीज उनको दिखाएंगी। अब बात करते हैं कि उनको फीस कौन देगा। उसको फीस देंगे पार्टीज इन द प्रोपोर्शन एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड फिक्स। अब ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में। सी एनालिसिस की ब्यूटी ही यही है कि आपको पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी के ऑप्शन कौन से सही नहीं है। और जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है और कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब ऐसा भी होता है कि हम 1000-2000 क्वेश्चंस लगा रहे हैं पर उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे। एनालिसिस क्या है? इट्स अ पोस्ट वर्कआउट मील होता है ना, जैसे पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, ये वो है। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपने उसके आंसर्स देखे, अब उसका आप एनालिसिस करो। एनालिसिस करने से मतलब आप 100 क्वेश्चंस के अगर एनालिसिस कर लेते हो ढंग तरीके से तो दैट इज इक्वल टू योर 500 क्वेश्चंस। इजंट इट अमेजिंग? तो आप एनालिसिस में बहुत ज्यादा फोकस करिए। हम जनरली एनालिसिस करते ही नहीं है, सिर्फ हमने आंसर्स देखे और पेज पलटते जाते हैं, एंड दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, आई मस्ट टेल यू। अब इसमें मैं ये रिलेट कर देती हूँ कि सेक्शन 45 to 51 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड होता है। तो ये वाला कहाँ रिलेवेंट होगा? फ्रॉम सेक्शन 45 to 51 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये लिंकिंग भी बहुत जरूरी होती है एक एक्ट की दूसरे एक्ट से। ऑलराइट, now we have question number 37. Under the specific relief act, the limitation for the suit of specific performance is 1 year, 2 year, 3 year or 12 year. The correct option is 3 year, and this was from the module 5 of the Edzorb law bank. ये article 54 is provided to you here. अब कौन से दिन से the limitation period begins to run? The date fixed for the performance, or if no such date is fixed when the plaintiff has noticed that the performance is refused. ये भी आपका questions बनते हैं क्योंकि generally ये पूछ लेते हैं कि किस दिन से limitation period start होगा। All right. Now the remedies are provided कि specific relief act में कौन कौन से remedies हैं? That is about the recovery of possession of the immovable property, movable property, specific performance of the contract, rectification, rescission, cancellation, declaratory decree and injunctions. Now we have question number 38. Under the specific relief act, the provision relating to non-enforcement except with the variation is section 16, 17, 18 or 19. The correct option is section 18. And it was from the simplified notes of the Edzorb law opinion. Section 18 देख लेते हैं. This is again an important section. Where the plaintiff seeks specific performance, to which the defendant sets up a variation. Defendant ने उसमें एक variation set कर दी. Now the plaintiff cannot obtain the performance. ठीक है, लेकिन इसकी कुछ exceptions क्या है कि by fraud or mistake of fact, the written contract in its term on effect is different from what the parties agreed. मतलब parties ने जो agree करा था ये उससे different है. Secondly, सारे terms contain नहीं करती. Thirdly, the object of party जो था to produce certain legal result वो produce नहीं कर पा रहे. And further, execution of the contract के बाद उन्होंने terms vary करे हैं. All right. Now we have next question. Question number 39. Under the Specific Relief Act, when an instrument in writing does not express the real intention, then either party may institute a suit for cancellation, rectification, rescission, or impounding. The correct answer is rectification. And it was from the module 2 of the Edzorb law Bank. Now section 26 provides for the rectification of the instrument. Key, due to the fraud or mutual mistake, contract or other instrument in writing, it does not express the real intention of the parties. Then either party or his representative in interest may institute a suit to rectify the instrument. तो क्या क्या grounds हो सकते हैं rectification के? fraud, mutual mistake, section 20 में provided है. ठीक है, ओके. और ये leading case law है इससे, हाजी अब्दुल रहमान का. तो आपका ये मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40. अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सेक्शन 30, 31, 32 और 33. द करेक्ट ऑप्शन इज सेक्शन नंबर 32 एंड इट वाज फ्रॉम द मॉड्यूल 5 ऑफ द एड्सॉर्ब लॉ बैंक. ठीक है, सेक्शन 32 प्रोवाइड्स व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसिल्ड. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. Under the Specific Relief Act, further relief under section 34 must be the one available as additional on the date of the suit,
after the filing of the suit, as alternative on the date of suit, as alternative during the pendency of the suit. The correct option is A here, and it was from the module 5 of the Edzorb law Q bank. ठीक है, section 34 again a very important section for SRA मेंस के लिए भी, and of course your judgment writing also. ठीक है, okay. See, everything is in very detail is provided to you. जब MCQ के साथ आप ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपने अगर पढ़ ली कि लीगल कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, एंटाइटलमेंट का क्या मतलब होता है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आपका एक आंसर वैसे ही प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है, तो मैं इसीलिए इस चीज़ में बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेंस ही अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए क्रैक करना. मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में ही नहीं होता ना कि कैसा होने वाला है, तो मेंस को आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है. एमसीक्यूज के साथ ही आप मेंस की भी तैयारी करो. फिर जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करो तो उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करवाओ. विदाउट इवैल्यूएशन आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आंसर राइटिंग होती है तभी हमें हमारी मिस्टेक्स पता चलती है. और एड्जॉर्ब में इतनी अच्छे से लाइन टू लाइन इवैल्यूएशन होता है, एक एक चीज़ आपको बताई जाती है कि कहाँ करेक्ट, कहाँ पे आपकी गलती है, क्या आप ऐड कर सकते थे, कौन से फैक्ट्स आपने नहीं लिखे हैं, और क्या कंक्लूजन इसका होना चाहिए था. तो आपको इवैल्यूएट जरूर करवाना है. Find yourself evaluator, be it your senior or anyone else, but there must be somebody who is evaluating your answers. Okay. Okay. Now we have question number 42. Under the Chhattisgarh Excise Act, the power of state government to exempt persons or intoxicants from the provisions of the Act is related to Section 66, Section 65, 67, and 68. The correct answer is option number A. And it was from the Chhattisgarh Excise Act, Section 66, local laws, provided by our simplified notes. Now we have question number 43. Chapter 8A of Chhattisgarh Excise Act is related to special provisions of the schedule areas, miscellaneous, detention, investigation, and trial of offence, or none of the above. The correct answer is A here. And I must tell you the feedbacks that we received about the free content that we provided on the Telegram channel about the Chhattisgarh local laws. It's so good कि उन्होंने कहा सारे क्वेश्चंस इसमें से ही आए हैं. जनरली क्या होता है, जो लोकल लॉज होता है ना, वो हम इग्नोर करते हैं पढ़ना, क्योंकि हमको मेजर एक्ट से ही फुर्सत नहीं मिलती. बट आप जब एड्जॉर्ब के तरीके से पढ़ते हैं कोई भी एक्ट को, तो इट बिकम्स रियली इजी. जब आप कलरफुल आपको प्रेजेंटेशंस करी हुई हो, पिक्चर्स हो, इलस्ट्रेशंस हो, तो किसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा. जैसे हम छोटे छोटे बच्चों की बुक्स देखते हैं ना, व्हाई देयर आर सो मेनी पिक्चर्स, क्योंकि टेक्स्ट इतना जल्दी दिमाग में नहीं जाता. पर पता नहीं क्यों बड़े होते होते हम ये सब भूल जाते हैं कि हमको पिक्चर्स के थ्रू ही समझ में आएगा. जब भी आप कोई चीज़ रिकॉल करते हो एग्जाम में भी, तो आपने कभी याद करा, आप आंख बंद करके जब सोचते हो तो आपको वो लिखा हुआ ही याद आता है आपके नोट्स में से. तो वहीं पर अगर कोई पिक्चर होगी तो और जल्दी याद आएगी. ठीक है, ओके. Now next question, question number 44. Under the Chhattisgarh Excise Act, security for the appearance in case of arrest without the warrant is related to Section 56, 57, 58, 59. The correct option is option number B. It was again from the Chhattisgarh Excise Act, Edzorb Law Premium. ये रहे वो short notes, the simplified notes of the all clauses. Now we have question number 45. Under the Chhattisgarh Excise Act, the penalty for the offences against life is defined in Chapter 7C, 7B, 7A, or none of the above. The correct option is option number C. And it was from the Chhattisgarh Excise Act, Local Laws Premium, Edzorb Law Premium 3.0. Okay, now this is the whole chapter provided to you. Now we have question number 46. Under Chhattisgarh Excise Act, the confiscation of the seized intoxicants, articles, implements, utensils, materials, conveyance, etc. is related to Section 47, 47A, B, or C. The correct option is B here. It is again from the Edzorb Law Premium. ठीक है, ये 47A आपको पूरा provided है. Okay. Now we have next question. Under the Chhattisgarh Excise Act, the authority granting any license, permit, or pass under this act may cancel or suspend it if any duty or fee payable by the holder thereof be not duly paid, if the holder thereof is convicted of any cognizable and non-bailable offence. A and B both are correct, or none of the above. The correct option is C here. And this is again from our notes. The whole section is provided to you as an explanation. Now we have question number 48. Under the Chhattisgarh Excise Act, the closing of shops for the sake of public peace is related to 22, 22, 23, 21, or none of the above. The correct answer is G, because it is 24. And this is again from our notes.
Closing of the shops for the sake of public peace. कौन कर सकता है? The district magistrate can do this. Now next question, section 23A of the Chhattisgarh Excise Act is related to prohibition of the sale of liquor or intoxicating drug to the person under the age of 21 years, prohibition of the advertisement relating to the liquor, prohibition of the employment of men and women under the age of 21 years, or all of the above. The correct option is B here. And this is again from the Edzorb law premium. Okay, 23A में advertisement दिखाया गया, what it includes: the notice, circular, label, wrapper, etc., any announcement, any slide or the film exhibition. ठीक है. Now the next question, the penalty for the offences not otherwise provided for under the Chhattisgarh Excise Act shall be ₹100, 500, 5,000 or none of the above. The correct option is none of the above. And this was again from the Edzorb Law Premium 3.0. Okay, so this is it for this session. In the next session, we will be dealing with another 50 questions. Remember that every bit of knowledge that you have gained here is your superpower. Knowledge is always a power. और जब बात legal knowledge की हो तो फिर उसके कहने ही क्या, ठीक है? So with every case law, with every section, you are moving closer towards your goal. All right. So keep your focus on your goal. Keep learning law. Keep working hard. And until we meet again, keep shining. Take care. Bye bye.